नमो नमः। शास्त्री द्वितीय खंड, सभी विषयों के छात्र, जिसमें बचत सभी के लिए, लेकिन व्याकरण विषय के छात्र जो हैं उनके लिए बहुपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणी संधि विषयकाणी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणी जो परीक्षा में पूछी जाती है, तो वो एक बार आज देख लिया जाए। अगर मान लीजिए प्रश्न आ रहा है जो संधि इत्यत्र प्रत्यय का, उत्तर बोलेंगे इक्तिन प्रत्यय। प्रश्न, वाक्ये संधि कार्यम भवति, उत्तर विवक्षाधीनम। प्रश्न, कथि संधियः के च ते, तो पंच संधि, अच संधि, हल संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि एवं स्वादि संधि। सूत्राणि कति विधानि के च ते, षड् विधानि सूत्राणि, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकारश्च। इको यणचि इति सूत्रेण का भवति, यन भवति। यन संदेह उदाहरणान् दर्शय। दध्यत्र, स्वागतम, दध्योदनः, धात्रंशः, लाकृतिः इत्यादि। नेमे इत्यत्र कः संधि, तो नेमे इत्यत्र गुण संधि। आद्यन्तं प्रत्येकम अभ्यग्निः इत्येषु कः संधि, अत्र यण संधि। अयादि संधेः उदाहरणान् दर्शय। हर्ये, विष्णवे, नायकः, पावकः, गव्यम, नाव्यम। गुण संधेः उदाहरणं दर्शय, तो गुण संदेह उदाहरणम रमेशः, कूपोदकम, जलोर्मी, कृष्णर्धि। एवं अग्रे गुण विधि कस्य भवति, तो गुण विधि भवति इक इत्यस्य। चीधनतव्यत इत्युक्ते चेतव्यम, धातोः को विधि अस्ति, तो गुण विधि। प्रधन एजते, संधत, प्रेजते। गुण संज्ञकाः के, अत धन एंग, अर्थात ए ओ। गुण संधि विधायकम विधायक सूत्रम किम, तो आद्गुणे। तव धन लरीकारः संधत, तवलकारः। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो अदेंगुणम, अदेंगुणः। अदेंगुण अत्र अत इत्यनेन ह्रस्व अकारस्य बोधः केन सूत्रेण भवति, अनुदित सावर्णस्य चाप् प्रत्ययः। इ उ इत्यनयोः गुणे विहिते सति किं परिवर्तनम्, ए ओ इति। वृद्धि संधिं दर्शय। तस्यैषः गंगौघः, कृष्णौतकण्ठ्यम, प्रौहः, प्रारणम् इत्यादि। तवैव इत्यत्र कः संधि, वृद्धि संधि। एत्येधत्यूठसु इति सूत्रेण कः आदेशः स्यात्, एते सूत्रेण वृद्धि आदेशः स्यात्। वृद्धि संज्ञकाः के, आत ऐच, अर्थात ऐ ओ, ऐ ओ। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, वृद्धिरेचि। वृद्धि संज्ञा संधि विधायकम सूत्रम किम, तो वृद्धिरादैच। वृद्धि विधि कस्य भवति, तो इक इत्यस्य। प्रश्नस्ति गौ धनसु इत्युक्ते गौ, अत्र गो शब्दे, गो शब्दो को विधि, अत्र गो शब्दे वृद्धि। प्रश्न, पट धन घय पाठः, अत्र धातौ को विधि, वृद्धि। सखी धन औ सखायौ, अस्य शब्दस्य इकारस्य को विधि, वृद्धि। दशरथ धन इय
दाशरथी अत्र दशरथस्य आदिस्वरस्य वृद्धि केन सूत्रेण भवति तद्दिखेतेष्व चामादेः ह्रीधन घञ आहारः अत्र धातोरिकारस्य वृद्धि केन सूत्रेण विधीयते अचोनितिः बलधन घय बादः अत्र धातु अकारस्य वृद्धि केन सूत्रेण भवति अत उपधायाः सूत्रेण क्रीधन्नबुल कारकः अत्र धातोरिकारस्य वृद्धि इत्यनेन किं भवति आ सुखेन ऋतः सुख ऋतः सुखार्तः अत्र को विधि वृद्धि ई उ इत्यनयोः वृद्धिः विहिते सति किं रूपम् ऐ औ इति द्वित्व विधिना संबद्ध सूत्रं किम अनचि च शिशुधन ऐक्यम इत्यस्य संधिपदं किम त शिष्वैक्यम सुधन उक्ति इत्यस्य संधिपदं किम सुक्ति दैवेश्वर्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः तो दैवधन ऐश्वर्यम दीर्घ संधि केन सूत्रेण भवति अकः सवर्णे दीर्घः दीर्घ संधि उदाहरणं दर्शय पुस्तकालयः वधूपकारः दैत्यारिः श्रीशः वाचनालयादि पितृधन ऋणम् इत्यत्र कः संधि दीर्घः अश्चुत्व संधि केन सूत्रेण भवति अस्तो अश्चुना अश्चुः अस्तो अश्चुना योगे अश्चुः स्यात् अश्चुत्व संधे उदाहरणान् दर्शय स हरिष्येते रामश्चिनोति त च सच्चित् सार्गिञ्जयः अश्चुत्व संधि केन सूत्रेण भवति उत्तर अष्टुना अष्टुः अस्तो अष्टुना योगे अष्टुः स्यात् अश्चुत्व संधे उदाहरणान् दर्शय रामषष्ठः हरिष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रे ढोक्षे षट्शतः यशांसि अत्र कः संधि अनुस्वार संधि तवैव इत्यत्र कः संधि अवधारणार्थे पररूपं षड्वारम् अत्र कीदृशो हल संधि अत्र जस्तु संधि अभवच्च इत्यस्मिन् कः संधि अश्चुत्व संधि गोधन्यम पदस्य संधि शब्दः कः गव्यम गोधन युतिः पदस्य संधियुक्तं पदं किं गव्युतिः अस्तु एवं प्रकारेण 150 प्रश्नोत्तरम् अहं कथितवान् भवान् सर्वे शृणोतु ध्यानपूर्वकेन तस्य उत्तरपुस्तिकोपरि लेखनं करोतु यस्यतः परीक्षायां भवतः साहाय्यार्थं भविष्यति अतएव शुभकामना अस्तु नमो नमः।